Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ और इस बारे गलबात करते हैं पारुल बख्शी ना। पारुल, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो आज के इस युग में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी के भी सक्सेसफुल होने में या नाकामयाब होने में। अब हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गए पर कामयाब नहीं हो सक रहे, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं हाउ कैन मार्केटिंग टूल्स बी इफेक्टिव ताकि वो कामयाब हों? Well, first of all, marketing is a tool that helps people. Helps a person that already has some sort of talent. जी. Right? So we can maybe do 70% of the work, but even that 30% comes down to the talent that you have. जी. Right? So yes, it can help, but it has to be repetitive. And there's a lot of work that goes into this. So जी. why people, जैसे कि youngsters struggle इसलिए करते हैं इस चीज़ में क्योंकि I think they haven't really thought about the consequences as to like when they started, okay, it looks all glamorous and fine, but they don't realize how much hours of work it takes. Right. And how much of hours of non-paid work, like Right. how much money they're going to lose as if they were to get just a 9 to 5 or another career. जी. But when it does work by some chance, then it's very fruitful. Right. तो उसमें मार्केटिंग क्या रोल अपना निभाती है? हाउ कैन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बी अडॉप्टेड जिसके साथ कि उनका जो हार्ड वर्क है उसको पे बैक भी मिल सके? I think that if it's done, first of all, it has to be very consistent. जी. It has to be very repetitive, and they have to find a certain niche that they want to work on. Like certain people, like you'll see a lot of actors and actresses, but if you don't pick a certain niche, like let's say maybe you want to be in arts movies, more focused. Have you seen a lot of small actors from art movies become really big stars? Oh, yes, later on, yes. Because they've chosen that genre. जी. So they're not open to a full wide variety. So once you pick a niche or a small little place to sort of put yourself in, Right. I think that is the best way to first think about it, जी. then find a person that can help you market in that genre. Right. It's easier to be famous in a smaller segment than in a big large ठीक. segment. तो बेसिकली आपने अपना जो पैशन है उसको फाइंड कर लिया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, पर उसके बाद मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप बोथ मेन स्ट्रीम और साउथ एशियन दोनों ही फील्ड्स में काम करती हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है हमारी अप्रोच में और मेन स्ट्रीम की अप्रोच में? क्योंकि कामयाब तो दोनों तरफ से कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति होना चाहता है हमारा यंगस्टर जो है, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है और उससे क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, सजेशन क्या देना चाहेंगे? जो मेन स्ट्रीम में वैसे जो हमारे साउथ एशियन यंगस्टर्स हैं वो भी काफ़ी मेन स्ट्रीम में हैं जी. एंड सम ऑफ देम हैव डन रियली वेल फॉर देमसेल्व्स. So I don't think कि it matters what community you belong to or which side of the spectrum you're on. जी. But I think that what South Asian ones are missing is maybe they need better productions and bigger budget movies. Right. But in Punjabi, in our South Asian community, Punjabi movies are doing very 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 well. Right? लेकिन वो तो एक बड़ा स्टेप हो गया, मूवीज़ का तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया कि बहुत सारे सिंगर्स हमारे जैसे हैं फॉर एग्जांपल, सारे तो कामयाब नहीं हुए, हर एक कोई कोशिश कर रहा है, बट आई एम जस्ट फोकसिंग उस नज़रिए से कि मार्केटिंग में क्या कुछ चेंजेस आप समझते हैं लाने की ज़रूरत है जिसके साथ कि उनको भी कुछ आउटपुट जो है बेटर हो सके? I think they have to do everything. Okay. They cannot be stuck to only the South Asian community. Even if you're trying in the South Asian community, go mainstream and do some work there. ठीक. So when you do a balance, it's easier because you add more to your portfolio. When you add more to your portfolio, there's more that you can market. ठीक.
So I think that it's about portfolio building राइट instead of saying that what we can market here or there. ठीक Yeah. और पारुल सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इनिशियली हिकअप्स होते हैं और बजट जो है वो एक मेजर जी। प्रॉब्लम होती है। तो अब जितना भी कम से कम कोई लगाना चाहे वो चाहता है कि उस कम लगे पर आउटपुट उसकी बेटर हो सके, तो उसको मुख्य रखते हुए क्या करने की ज़रूरत है, कैसे उस स्मॉल बजट के अंदर अपने आप को बेस्ट एक्सपोजर जो है वो दिया जा सकता है? I think that when it comes down to having small budgets, either you have a really good team, जी। very supportive team, but sometimes when people are not being paid, they're not very motivated, to be really honest. So I think it is good to find a good balance in terms of the money that you're going to spend, and a good balance in terms of finding the right people to work for you. And then, if possible, try and wait until you have more budget. Instead of just spending, like, I met this director in the mainstream, I won't say his name, but he was like, you know, I had $35,000 and I spent every penny making this movie. जी Now I'm bankrupt. He's like, this better work. I mean, that to me is like ridiculous, राइट right? So सो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। planning, yeah, there's grants available, there's people that will fund you. Plan it, write a business plan, right? Go get grants, go get funding. Get the funding. Funding is very सो important. स्टार्ट स्मॉल एंड देन गो बिग, आपका ये Yeah. मशवरा होगा। But make sure you get the funding. ठीक, Yeah. पारुल जी थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी अपने एक्सपीरियंस से, थैंक यू। Thank you. ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਰੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੋਂਟ ਬਿਕਮ ਅ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।